सकता है। आज हम इस वीडियो में बीए सेकंड सेमेस्टर फिज़िकल एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्योरी पेपर आपका 60 मार्क्स का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 65 हैं। इंटरनल असेसमेंट 5 मार्क्स की लगेगी। टाइम इसका 3 घंटे का होगा। बाकी सिलेबस के बारे में अगर जानना चाहते हो तो आप उसका अलग से वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ये सिलेबस आपका 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि पूरे सिलेबस में से होंगे, और बाकी 4 यूनिट उसमें सिलेबस डिवाइड किया गया है। तो हर एक यूनिट में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, 1 शॉर्ट क्वेश्चन आना है। शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होगा, 6 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, 12 मार्क्स का हो जाएगा। और लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा, जो कि हर एक यूनिट में से इंटरनल चॉइस के अकॉर्डिंग होगा। 2 क्वेश्चन में से 1 आपने उसका आंसर देना है और 12 मार्क्स का होगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इस तरह से हैं। व्हाट इज़ फिजियोलॉजी? एंड नेक्स्ट इज़ राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, एंड देन डिफाइन स्ट्रेंथ, and next define health education, and next is what is fracture, and then what are 2 factors that affect growth and development, and then what is the difference between growth and development, and next is what is the meaning of development in physical education, and next is what is this location of bones and fracture, and then what do you mean by cooling down, and next is write about the bones of face, and then what do you know about functions of cell, and next what is a human cell, and then write any 2 functions of cell, and next define speed, and then what is muscular system, and next what is personal hygiene, and then write 4 major tournaments of the game Kho, and then define anatomy and physiology, and next is what is cell, and then enlist the types of warming up, and then define heredity, and next is what do you know about functions of cell about the bones of face, and then what do you know what do you mean by cooling down, and next define psychology, and then write any 2 functions of the skeletal system, and then what is fracture, and next write the functions of mitochondria, and then what are involuntary muscles, and then what is dislocation, and then write the equipment required in Kho game, and then what is the meaning of growth, and next is what is anatomy, and next write the methods of warming up, and then name the bones of face, and next name 2 major tournaments and 2 Arjuna awardees of Kho game, and then what do you mean by strain, and next name the longest muscle of human body, and then explain locomotion speed, and then name the various fundamental skills of Kho. स्टूडेंट्स, ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस इसके बीच में से भी आ सकते हैं, बाकी आप लॉन्ग क्वेश्चन जब प्रिपेयर करोगे तो उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, उसमें से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब है लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस, यूनिट सेकंड। इसके क्वेश्चंस इस तरह से हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द फंक्शंस ऑफ मस्कुलर सिस्टम एंड विद इट्स स्ट्रक्चर, एंड देन राइट लेफ्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मस्कुलर सिस्टम, and then write 2 types of muscles on the basis of their structure, and then write descriptive about vertebral column and ribs, and then describe the functions of skeletal system, and then what are the effects of exercise on muscular system, and then discuss the types of bones and names of various bones of the body, and then define skeletal system. Write the names of various bones of human body, and then write the names of various bones of human body. ये क्वेश्चंस मोल्ड करके डाले गए हैं। कईयों का क्वेश्चन का आंसर सेम है, कईयों का थोड़ा बहुत चेंज है। तो इस तरह से ही आपको
पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर सेम होगा लेकिन उसको मोल्ड करके डाला गया होगा। तो इसके लिए ये एग्जाम्पल्स के लिए यहीं पे ऐड कर दिए गए हैं। गिव क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बोन्स एंड देन व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन फिजिकल एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम and then describe the structure, types and functions of muscles, and then define cell, elaborate in detail about the structure of the cell, and then draw a diagram of cell, describe its organ in detail. And यूनिट 3 के क्वेश्चंस इस तरह से हैं। एक्सप्लेन प्लेइंग रूल्स ऑफ खो खो एंड एक्सप्लेन इट्स बेसिक फंडामेंटल्स, एंड देन व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ वार्मिंग अप, and next what is physical fitness, discuss the components of physical fitness। स्टूडेंट्स बाकी सब्जेक्ट्स के भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी चैनल पे देख सकते हो। कुछ के वीडियोस डाल दिए गए हैं, कुछ के अभी अपलोड करने हैं, और सिलेबस भी आप यहीं से देख सकते हो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। और सोशियोलॉजी का तो आपको पूरे सिलेबस के ही लेक्चर्स यहाँ मिल जाएंगे, बहुत ही ईजी वर्डिंग में वो तैयार किए गए हैं। वहाँ से आप अपने पूरे पेपर की तैयारी कर सकते हो और पेपर कैसे करना है वो भी बताया गया है। एंड नेक्स्ट इज़ एलेबोरेट द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, एंड नेक्स्ट डिफाइन वार्मिंग अप एंड स्टेट इट्स इम्पॉर्टेंस इन स्पोर्ट्स, एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय वार्मिंग अप, एग्जामिन द मेथड ऑफ वार्मिंग अप, एंड देन डिस्कस वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन इन स्पोर्ट्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस, and then write the history of Kho-Kho, draw the diagram of Kho-Kho court with specifications, and next draw Kho-Kho ground and write the history of game, and then briefly explain the history of Kho-Kho and its rules, and then explain the basic fundamental rules and the regulations of Kho-Kho game, and then write the history of Kho-Kho, draw the diagram Kho-Kho court। and unit 4 इस तरह से है। write down the meaning and importance of personal hygiene, and then what is personal hygiene, explain the objective and scope of health education, and then write the meaning and definitions of health, and then discuss the principles and importance of health education, and then what is a fracture, what its types, causes, symptoms and treatment, and then explain the meaning and principles of health education, and then define first aid, write about first aid given in case of fracture, and then explain the first aid for drowning and sprain in detail, and then explain about the first aid given in case of fracture, sprain and strain, and then define first aid, write its importance in physical education and sports with special reference to sprain and strain, and then what is the sprain and strain, write its causes and preventive measures, and then define health education, explain the objectives and Kho-Kho of health education। ये थे 4th यूनिट के क्वेश्चंस। अब है 5th यूनिट। 5th यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड देन राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, एंड देन व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, and then what are the age and sex differences in physical education and sports, and then describe the factors affecting growth and development, and then explain the effects of heredity and environment of growth and development, and then what do you understand by growth and development, write various stages of growth and development, and then discuss heredity and environment and its effects on growth and development। And next is what is it development, describe various stages of development, and then define growth and development, what are the various differences in growth and development, discuss in detail। स्टूडेंट्स ये थे लॉन्ग क्वेश्चंस ऐसे टाइप। ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन होंगे, कोई एक का आपने आंसर देना होगा। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।